Hi everybody, welcome back. We're continuing our topic of objects और इस lesson के अंदर we'll be playing around with the object that we created in the previous lesson. तो the thing is कि अगर मैंने एक object तो बना लिया, for example I have a user object, लेकिन अब मैंने इसकी कोई values अगर access करनी है या set करनी है तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ. So it's quite simple to access a particular value. All you need to do is type in the name of the object dot and type in the particular property. जितनी भी ये fields हैं, ये जो key pairs हैं, for example ID, name, gender, object की terms में इसको हम properties कहते हैं. The property is encapsulated form of the key value pair. So to access any property, this is what we need to do. We can just type in the property key and we'll get the value. उसी तरह से अगर मैं कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करना चाह रहा हूँ तो मैं एग्जैक्टली यही तरीका अडॉप्ट करूँगा. ऑल आई नीड टू डू इज़ पुट इन द डॉट नोटेशन, टाइप इन type in the property name, and I can set the value, and later on if just to check, yeah, so that's how you can set a particular value. एक चीज़ जो कि हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी देखी, और वो क्वेश्चन मैं अभी दोबारा भी उस पर एक वीडियो करूँगा क्योंकि जस्ट टू क्लियर ऑफ एनी कन्फ्यूजन, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे काफ़ी पसंद है. It perfectly depicts the nature of an object and arrays as well. So if I want to set, जैसे मैंने practice questions में भी कहा था कि you can also set the keys or properties by using the array notation. So अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र के अंदर एक और notation या एक और property add कर दूँ, तो I can also use something like this. What else can we add into a user? Address. Although I won't give away my actual address, but this is something I can do. Right, and just to print out the object again, this is something that we can do. Yeah, so we get the property of address. इसी तरह से हम ये property access भी कर सकते हैं by using the array notation, right? So this is something that I wanted to discuss and talk about. I hope I made it more clear. So yeah, thank you for watching this video. I'll see you in the next one.